First, today's topic is percentage composition. परसेंटेज कंपोजिशन में हम किसी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं. इसे क्वेश्चन से समझा जा सकता है. जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, कैलकुलेट द mass percentage of each element in sodium sulfate. Calculate the mass percentage of each element in sodium sulfate. So sodium sulfate is Na2SO4. तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 into 23 plus 32 plus 4 into 16. This is 46 plus 32 plus 64 equal to 162. So 6 to 8 for 12. Carry 1, 5 plus 3, 8, 6, 142. So, इसमें परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ that element upon total mass into 100. So percentage of sodium equal to 46 upon 142 into 100. So 23 and 71, 2300 upon 71 equal to 2300 upon 71 equal to 7 3 ja 21, 30 point something. So this is about 33.8%. Percentage of sulfur equal to 32 upon 142 into 100. This is equal to 1600 upon 71. This is about 22.4%. Now percentage of oxygen equal to 64 upon 142 into 100, and this is about 44.5%. So this is the method by which you can determine the percentage composition of a compound. The second question is, how much quantity of copper can be obtained by obtained by 100 gram from 100 gram CuSO4. So CuSO4
Cu 63 plus 32 plus 64. So 32549. 639596159. So it is clear that 163 grams copper can be obtained from 159 grams of CuSO4. 159 grams CuSO4 gives 63 grams of copper. So 100 grams of copper sulfate will give 63 upon 159 into 100. So this is all about 40% or less. So this percentage of this grams of copper can be obtained from 100 grams of CuSO4. This may be different, about 40%. Now we will study empirical formula. The formula which represents the simplest whole number ratio of the atoms present in a molecule is called empirical formula. For example, glucose molecular formula is C6H12O6. The simplest whole number ratio of carbon, hydrogen and oxygen in this compound is 1:2:1. So empirical formula will be CH2O. So the formula which represents the simplest whole number ratio of the atoms present in a molecule is called empirical formula. Now method for determination of empirical formula. How you can find the empirical formula of a compound from given data? The question is, an organic compound or a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Find the empirical formula. And if molecular mass is 98.98, then what will be molecular formula? तो आप देखिए, इसमें एक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। और अगर उसका मॉलिक्यूलर मास इतना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास,
मतलब रिलेटिव नंबर, और फिर सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, अब देखिए इसमें इसका एटॉमिक मास 1, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5। अब रिलेटिव नंबर निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज इज 4.07 upon 1, this is equal to 4.07. now 24.27 upon 12, this is about 2.02. again 71.65 upon 35.5, this is also about 2.202. तो ये इनका रिलेटिव नंबर मिल गया। अब सिंपल रेशियो ऑब्टेन करने के लिए स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर से सभी रिलेटिव नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर ये दोनों हैं, इससे सभी को डिवाइड करेंगे। तो 4.07 अपॉन 2.02 अप्रॉक्स 2, 2.02 अपॉन 2.02 1, 2.02 upon 2.02 1. So in this given compound, the ratio of carbon, hydrogen and chlorine, carbon, hydrogen and chlorine, carbon is 1, hydrogen is 2 and chlorine is 1. So the empirical formula will be CH2Cl. This is the empirical formula of compound. Now the further question is, if the molecular mass is 98.98, what will be the molecular formula? To determine the molecular formula, you first calculate empirical formula mass. empirical formula mass कैसे determine करेंगे? C12 plus H2 plus Cl 35.5. This is equal to 49.5. This is empirical formula mass. Now N equal to molecular mass upon empirical formula mass. So this is equal to 98.98 upon 49.5. So N is equal to about 2. Now molecular formula is equal to empirical formula into N. So empirical formula is CH2Cl into N equal to 2. So the molecular formula will be C2 H 2 to the 4 and Cl2. So the empirical formula of compound is CH2Cl and molecular formula is C2H4Cl2. Another question related to empirical formula is
An oxide of iron contains 69.9% iron and rest oxygen. An oxide of metal contains 69.9% iron and rest oxygen. What will be the empirical formula? So, element, percentage, atomic mass, relative number, simple ratio. Element is iron and oxygen. Iron 69.9%, oxygen is 31.1%. Atomic mass, iron 56, oxygen 16. Relative number, percentage upon atomic mass. Percentage 69.9 upon atomic mass 56 equal to 1.25 about. Here 31.1 upon 16, this is equal to about 1.88. अब देखिए सिंपल रेशियो डिटरमाइन करने के लिए स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर से सभी को डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर 1.25 अपॉन 1.25 इक्वल टू 1 और 1.88 अपॉन 1.25 इक्वल टू 1.5। अब देखिए सिंपल रेशियो होल नंबर में नहीं आने पर हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2 से, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू 3, दिस विल कन्वर्ट इनटू 2। सो द रेशियो ऑफ iron and oxygen in this compound is 2:3. 2:3. So empirical formula will be Fe2O3. This will be the empirical formula of compound.